Hello students, class 8th, chapter number 1st, rational numbers. After completing exercise 1C, our next heading is that multiplication of rational number. So what we have do in this multiplication of rational number? We have two rational numbers. Either both number are positive, both rational number are positive, both are negative. One is positive, one is negative, one is negative, second is positive. So see this one, multiplication of rational numbers for any two rational number in the form of a upon b and c upon d. So we can say, we define that a upon b multiplied by c upon d is equals to a multiplied by c divided by b multiplied by d. That means numerator numerator से multiply हो जाएगा और denominator से multiply हो जाएगा. Then we can write this one like that. Okay. For example, we take one simple example here. Suppose 1 by 2 multiply with minus 2 by 3. Okay. Here is in this one is the positive rational number, this one is negative rational number. So we multiply both of them. So how we multiply? That is 1 multiply by numerator multiply by numerator. That is 1 multiply by minus 2 divided by 2 multiply by 3. That is 2 multiply by 3. Okay. So this one is becomes, that is 1 multiply by minus 2, that is becomes minus 2, and this one 2 multiply by 3, that is 6. Okay. Then after आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं. सपोज यहाँ से मैं क्रॉस में 2 से 2 कैंसिल कर देता. ओके. फर्दर इसे मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ. सी दिस वन 1 by 2 multiply by minus 2 by 3. ओके. फॉर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर और कैसे आ सकता है? देखिए क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हैं. 2 से यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो रहा है. क्रॉस में आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल भी कर सकते हैं. आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं? इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं. ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं. ऐसे क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हैं. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी फ्रैक्शन से कैंसिल नहीं होते हैं. आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को या फिर ऐसे एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, ऐसे क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं. ओके. सो दिस वन 2 to 2 कैंसिल आउट वन टाइम. ओके. Then remaining is we write the remaining. ऊपर 1 था, नीचे भी आपके पास कैंसिल करने के बाद क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आपके पास कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा? 1 divided by 3. Now multiply both them. This 1 multiply by 1, that is minus 1, and 1 multiply by 3, that is 3. So answer we get minus 1 by 3. Or similarly this one 2 by 6 is also 1 by 3 if we take cancellation. See, suppose 2 table, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this one is also becomes minus 1 by 3. So the both answers are same. Okay. आप इसे कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसे भी छोड़ते हैं, तब भी आपका आंसर राइट है. ओनली मल्टीप्लिकेशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. ओके. देन आफ्टर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दैट properties of multiplication of rational numbers. In first is that closure property. Suppose we have two rational numbers in the form of a upon b comma c upon d. Then according to this closure property, this one both rational number closed by this multiplication sign. So this one is closure property, a upon b multiplied by c upon d. जैसे अपन ने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था, वैसे ही अपन इसे किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं. a upon b multiplied by c upon d. Closure property, that means closed with the multiplication sign. Got it? Now second is that commutative law. Commutative law, that means suppose we have two rational numbers a upon b comma c upon d. This one commutative, that means commutative मतलब एक के बाद क्या होता है? एक के बाद एक. Okay. According to name implies that one after the other. Okay. So this one a upon b comma c upon d. Suppose we have two rational numbers. Then how to define this one commutative law? That is a upon b multiplied by c upon d is the same answer like that is equal to c upon d multiplied by a upon b. पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप
इससे आगे रख दें और इसे पीछे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आना सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेशनल नंबर ना लेके एक सिंपल नंबर लूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 2 3 जा 6 and 3 multiplied by 2 that is same answer 6. So this one is multiplication follow is commutative law. Okay, now the next property is that associative property. Associative law क्या कहता है? That means we have 3 rational numbers. इसके लिए आपको 3 लेना पड़ेगा, ये 2 से आपको एसोसिएट नहीं होगा। तो we have 3 rational number, अगर आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर दें फिर बाद में तीसरे नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दें that means थर्ड रेशनल नंबर से, then after आप क्या करें पहले वाले को बाहर छोड़ दें और बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दें जो कि सेकंड और थर्ड नंबर पर है, तो आपका आंसर दोनों क्या आएगा सेम आएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सपोज you understand better from this example, that is a upon b comma c upon d and e upon f. We have 3 rational numbers, then firstly we multiply a upon b multiply c upon d in bracket, this one, then multiply e upon f outside the bracket. Okay, so is equal to now a upon b outside this one bracket and we multiply second and third number, this one c upon d multiply by e upon f firstly, then after multiply by a upon b, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास ब्रॉड मास b फॉलो होता है। ओके, जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं ब्रॉड मास, आपको ध्यान ब्रैकेट ओपन देन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस वन दैट इज ब्रॉड मास। So we multiply firstly first 2, then third one outside, then first outside, then second and third inside the bracket. So first we solve the bracket term, then after we solve the outside the bracket term. Okay. Now the fourth is that existence of multiplicative identity. Existence multiplicative identity. Identity से मतलब आप समझिए, identity का मतलब होता है जहाँ पर same value आ जाए मेरी। Suppose मेरी वैल्यू है, मैं खुद अगर मैं इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी वैल्यू सेम बनी रहे, तो मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर 1 ही ऐसी डिजिट है जिसे मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर से अपन को सेम नंबर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आपका आइडेंटिटी नंबर जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, और एडिशन के अंदर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है 0। ओके, सो दिस वन एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, that means a upon b, suppose we have a rational number, then we multiply this one rational number by 1, then we get the same answer a upon b, and again suppose 1 multiply by a upon b, अगर आप उस उल्टा भी कर सकते हैं इसका कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम a upon b। so this one follow this one multiplicative identity। okay, 1 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। थैंक यू। Now students, the next property is that property number 5 is distributive law of multiplication over addition. That means multiplication के अंदर addition law को follow करना और distribute करना। Like that we have 3 rational numbers a upon b, c upon d and e upon f. Okay, so how to apply this one distribution over addition in multiplication? That is a upon b multiply in bracket that is c upon d plus e upon f. आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो प्रीवियस क्लास है आपने 6th 7th में भी ये वर्क किया है, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर a upon b outside the bracket multiply in bracket c upon d plus e upon f। तो अपन क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तभी तो ओवर इन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसे होगा, that is a upon b multiply firstly with this c upon d, then what we get, that is a upon b multiply c upon d, then after plus sign, कौन सा साइन आ रहा है plus sign, that is plus, then a upon b multiply by e upon f, that is a upon b multiply by e upon f। got it? वापस समझ लीजिए, we have suppose 3 rational numbers, either all 3 numbers are positive, negative, और ये तीनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वो तो आपका मल्टीप्लिकेशन आपको पहले बताया वही है जो आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लास थी, तो और आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। तो देखिए a upon b मल्टीप्लाई विद फर्स्टली इन ब्रैकेट दैट इज a upon b मल्टीप्लाई बाय c upon d, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरो देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a upon b मल्टीप्लाई बाय c upon d, देन व्हिच साइन इज देयर प्लस साइन, तो पॉजिटिव साइन अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट इज a upon b अगेन मल्टीप्लाई विद e upon f,
that is a upon b multiplied by e upon f. Got it? The next property is that student multiplicative property of 0. Multiplicative property of 0. We know that if any rational number multiply with 0, then what we get? 0. So same, suppose a upon b multiply with 0, then what we get? 0. Or 0 multiplied by any rational number, that is a upon b in commutative law, then what we get? The answer is 0. Same. Okay. Now the seventh or last property, that is existence of multiplicative inverse. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस कब हो सकता है? जब उस रेशनल नंबर जो आपके पास है उसको ठीक उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए, तभी तो उसका क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसको कहते हैं. इनवर्स का मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो क्रॉस में हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. तो सी इन दिस वी हैव टू रेशनल नंबर a upon b, b upon a. इसका ठीक उल्टा रेसिप्रोकल. ओके, तो आपके पास पहला रेशनल नंबर a upon b, सेकंड रेशनल नंबर इज b upon a. Multiply both of them, that is a upon b multiply by b upon a. Here we see b to b cancel, a to a cancel. Similarly, b upon a multiply by a upon b. So a to a cancel and b to b cancel. So answer we get that is 1. क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 1. Thank you for being with us.